नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन के इस वीडियो सीरीज में हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ वेरिएबल एक्सीलरेशन। सो ये रहा क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स एक्सीलरेशन इज गिवन बाय a equal to 50 minus 36 t square. Determine the velocity of the particle when it has travelled 52 meter and time taken by it before it comes to rest again. ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। सो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन दिया गया है एंड हमें पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when it has traveled 52 meter. That means हमें इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को फॉर्म करना होगा। सो वी राइट द एक्सेलरेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv अपॉन dt. सो रीअरेंजिंग द टर्म वी राइट dv इक्वल टू 50 माइनस 36 t स्क्वायर इंटू dt. Then integrating on both sides we get integration of dv as v, integration of 50 as 50 into t and integration of 36 t square as 36 t cube upon 3 plus constant c1. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे v इक्वल टू 50t माइनस 12t क्यूब plus C1. Now to determine the value of constant C1 हम condition use करेंगे, that is particle starting from rest, that means at t equal to 0 second velocity is 0 meter per second. So on substituting these two values we get value of constant C1 as 0. So we get the final equation of velocity as 50t minus 12t cube. Let this be equation number 1. Now again हम velocity को rate of change of displacement with respect to time, that is dx upon dt के फॉर्म में लिखेंगे and on rearranging the term we get dx equal to in bracket 50t minus 12t cube into dt. So again on integrating on both sides we get integration of dx as x, then integration of 50t as 50t square upon 2, then integration of 12t cube as 12t raised to 4 upon 4 plus constant c2. then इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, that is x equal to 25t square minus 3t raised to 4 plus c2. Now again to get this value of constant c2 we use the given condition, particle is starting from rest, so therefore at t equal to 0 second displacement is 0 meter. Therefore on substituting these values we get the value of constant C2 as 0. So यहाँ पे हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दैट इज x इक्वल टू 25t स्क्वायर माइनस 3t रेज टू 4. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज 52 मीटर. देयरफॉर द इक्वेशन 2 will become 52 equal to 25t square minus 3t raised to 4. Rearranging the equation we write 3t raised to 4 minus 25t square plus 52 equal to 0. Now इस इक्वेशन के हमें दो रूट्स मिलेंगे, that is t square equal to we use the formula minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. So माइनस b की जगह पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह पे
-25 स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 3 एंड सी इज 52 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 इंटू 3। तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 और टी स्क्वायर इक्वल टू 4.33। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट we get two values, t equal to 2 seconds or t equal to 2.08 seconds. That means the value of displacement become 52 meter twice. First time when the time duration is 2 seconds and second time when the time duration is 2.08 seconds. Now to find out the time duration when particle has traveled for a distance of 52 मीटर, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि टाइम ड्यूरेशन एट विच पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। नाउ द पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0 अगेन। सो वी राइट time at which velocity becomes 0 again. Using equation 1 we substitute value of v as 0, so therefore 0 equal to 50t minus 12t cube। यहाँ पे t कॉमन निकलेगा, so we get 50 minus 12t square equal to 0, so t square is equal to 4.1667, so value of t मिलेगा 2.04 seconds। That means the velocity of the particle becomes 0 at t equal to 2.04 seconds। Now we have found out the time when displacement is 52 meter and also time when velocity is 0। so इन सारे वैल्यूज को डायग्राम का यूज करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। एट स्टार्ट दैट इज व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 0 है एंड वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 है। नाउ व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 52 मीटर, टाइम ड्यूरेशन इज 2 seconds and again when displacement becomes 52 meter at point C, time duration is 2.08 seconds। Meanwhile between at point B velocity becomes 0 at time duration 2.04 seconds। so इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि at point A distance traveled is equal to displacement because there is no change in the direction of travel of particle, whereas at point C distance traveled will become more or greater than displacement। therefore we get our required condition, that is at point A distance traveled is equal to 52 meter and hence हम time duration t equal to 2 second को consider करेंगे and we will reject time duration 2.08 seconds because at that time period distance traveled will be more than 52 meter। therefore we write as for t equal to 2 second, distance traveled equal to displacement, therefore using equation 1 value of velocity is equal to 50 into 2 minus 12 into t cube that is 2 cube। so इसे इवेल्युएट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिलेगा दैट इज 4 मीटर पर सेकंड्स। तो ये रहे हमारे फाइनल आंसर्स, दैट इज वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकंड व्हेन पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 52 मीटर एंड t is equal to 2.04 second when the velocity of the particle becomes 0। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।